Goal has been taken. I think Manchester United right now is the best example of why toxic cultures always lead to toxic results. Yeah. क्या आप इस टीम के अंदर genuinely आप Yeah. मेसी भी ले आओ ना Yeah. तो there'd be a problem in this team. Yeah. And मेसी को गालियां पड़ रही होंगी कि ये क्या बंदा है, ये खड़ा रहता है, ये भाग. Then you know every other pundit who's working for TV channels who's a retired player. When players talk about players is when the problem arises. It's never the media. It's Hello everyone, welcome to the Football Roundup episode. We're going to dive deep into the EPL, pick up the top teams, winners, losers, who we're happy with and who we think is really struggling. Let's get into it, gentlemen. I think more than anything हमें सिर्फ एक टीम से स्टार्ट करना चाहिए. तुमने स्ट्रगलिंग से एंड किया सेंटेंस, तो जो टीम इस टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, जिसके I've heard माशाल्लाह Southampton. या साउथहैम्पटन उनके सेम बजट था ना. वो लाल कपड़ों में मसला ये है कि दो यूनाइटेड फैंस बिठा दिए एक मैड्रिड फैन के साथ. हम लोग नहीं जीत सकते. नहीं तुम लोग अगर तुम लोग आजकल To be clear, it's not कि मैड्रिड फैन के साथ बिठा दिया, आप किसी के साथ भी बिठा देते ना यूनाइटेड फैंस को. I mean We should be the last two people sitting on this panel right now. I mean you ब्राइटन फैन भी तुम लोगों को इस वक्त जलील कर सकते हैं, तो प्लीज रियल मैड्रिड तक तो सोचो ना. वो चैंपियंस लीग खेलते हैं, पता है चैंपियंस लीग. यार एस्टन विला जैसी टीमें भी चैंपियंस लीग खेलती हैं. आई मीन द आयरनी इज कि वी आर प्लेइंग देम ऑन संडेस. पता नहीं जब तक ये निकलेगी उसका रिजल्ट आ चुका होगा या नहीं, बट लाइक there's no room for No, optimism. if United win, they can go top of the table, right? Which bottom of the I mean, that result does not matter. डिपेंड करता है कौन सी टेबल की साइड की बात हो रही है. Yeah, I mean, this club is a black hole for players, man. Like, you've signed all the big players. Like, just want to know from you guys. Okay, Paul Pogba, when he was signed, was supposed to be the best midfielder in the world. And Pogba ने फ्रांस के लिए उतनी अच्छी performances दी. He was one of the standout midfielders in the 2018 World Cup when they won the World Cup. What is with United and signing great players and then turning them into completely mediocre players? यार mediocre. So Pogba वाली चीज पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि I was very happy. Pogba जिस तरह चल रहा था अच्छा चल रहा था. And लोग जो एक यूवे की जो वो बनी हुई थी ना कि आएगा इसने 10 गोल मारने 20 असिस्ट देगा, एंड वो फैब्रिकास मोल्ड में उसको इंटीग्रेट करी थी हमारी फैन बेस. बट आई वाज वेरी हैप्पी विद लाइक वो, बट द इंजरी पाइल अप वाज क्वाइट वरीइंग बिकॉज वो हर कोई 2 महीने बाद बाहर हो जाता था. वो अब ये हमारी मेडिकल स्टाफ की गलती है, मुझे नहीं पता किसकी गलती है, बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क आउट एंड आई एम सो सैड अबाउट इट बिकॉज अभी तक इतना बड़ा चैज़म हमारी मिडफील्ड में एग्जिस्ट करता है जो वो अकेला कुछ 3 बंदों का काम कर रहा था उसके अंदर. यूनाइटेड फैंस हेट हिम राइट नाउ कि जूडास ये वो फलाना, पहले भी भाग गया, दोबारा आके फिर भाग गया है. एंड जब उसका वो बैन लगा था 4 साल का तो देयर इज सेलिब्रेशन गोइंग ऑन कि वो क्या बात है, जो कि अब 18 महीने का. What I like is that AT is still trying to put it into box, make it a little logical, trying to make sense of it. अच्छा यार इस वो तरह player देखो ना तो फिर पॉगबा ठीक था. वो अच्छा प्लेयर था हमारे लिए. Anybody saying otherwise is मतलब I mean, that's a very low standard. वो अच्छा player था हमारे लिए. I mean, let's be honest about it. But I think Pogba was a great player. मतलब जुगते मारनी है तो वैसे ही मार दे. नहीं, Pogba was a great player. Let's get it straight, right? He's a World Cup winner, right? And he won trophies with Juventus. Yeah. The problem was not Paul Pogba. The problem is कि आप Casemiro sign करते हो, who's the best defensive midfielder in the world when you sign him, right? He's won multiple Champions League by the time. And आप उसको कहते हो कि हम तुम्हें out of defense तुम्हें पहले बॉल देंगे क्योंकि तुम press resistant हो. While he spent his entire career in Real Madrid not being press resistant because Modric और Kroos उसके आगे होते थे, उसको press resistant होने की जरूरत नहीं. जब गोल किक होती थी तो Kroos would always drop between the two defenders. Obviously. How does United manage to do this? Like turn like these are great players, man. So I think one thing United has really cracked well, और players की जो reveal videos होती है ना, we do that really well. So starting with and I think that's Sanchez all time favorite. Yeah. Right? Sanchez being the piano, but यार इससे पहले भी पॉगबा और लुकाकू का जो वो Yeah. इकट्ठे मिल रहे थे एलए के अंदर, वो पॉग बैक वो that was revolutionary at that point. हम लोग से ज्यादा क्लिक्स किसी के नहीं आते. सिटी के वो जो टाइटल विनिंग क्लिक्स है हमारी साइनिंग से ज्यादा वो आते हैं. सो वी विन द सोशल मीडिया ट्रॉफी. Congratulations. but yeah, I think Congratulations. AT and I am trying to put a positive light to
I'm not. I mean, Don't like. at this point, I mean, हम लोग ना just अब इम्यून हो गए, ऐसा लग रहा है कि इतनी बुराइयां अबे हो रहने दे, इम्यून हो गए। मुझे हर मंडे को एपिसोड आता है डिप्रेस्ड। ये हर मंडे की सुबह मैसेज आता है ग्रुप में डिप्रेस्ड। that was me. ये है मतलब यानी- हर मंडे। And I think there have एक been आप- so many Mondays where I've said worst Monday. I like हमें It कह can't get like our significant others are sitting there कि you like फुटबॉल से आगे निकल जाओ, बच्चे हो गए हैं, मतलब बड़े हो जाओ, ये इतना अपना मूड इस पे नहीं खराब कर सकते। एंड आई वाज लाइक मैं कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, मुझे बट लाइक मैं क्या करूँ, मतलब मैं बंद गया हूँ, मैं आई एम कैदी हूँ मैं। So I think इसको इस तरह देखते हैं कि there has been no, so Glazers get a lot of hate कि यानी आप क्या कर रहे हैं, क्लब किस तरह चला रहे हैं, but when you look at it in terms of money spent, वो तो एक big check. Yeah, Like we continuously on the list जहाँ पे हम 1 to 3 में होंगे in terms of Yeah. net spend, probably because हम players अच्छी तरीके से बेच नहीं पाते, but also because we buy a lot. We can get into no, we can talk about कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए, but the investment is there, right? We've been overpaying by maybe 20, 30, 50%, but the investment has been there. There has been no doubts about that. But there is something really, really wrong with the club. Something really rotten At in the the middle soul, of the club. the soul has been taken. I think Manchester United right now is the best example of why toxic cultures always lead to toxic results. Yeah. कि आप इस टीम के अंदर genuinely आप Yeah. पीक मेसी भी ले आओ ना, Yeah. तो there'd be a problem in this team. Yeah. And मेसी को गालियां पड़ रही होंगी कि ये क्या बंदा है, ये खड़ा रहता है, ये Has भागता been, नहीं है. So हमने probably वरान को रिटायर करवा दी। I mean, yeah, Rafa Varane retired. By the way, people don't realize कि he was still only 31, 32 years old. 31 में उसको हमने रिटायर करवा दिया। And वो अपने पीक ईयर्स में उसने जब उसके पीक ईयर्स होने चाहिए एज डिफेंडर उसने यूनाइटेड के लिए साइन किया था. Stayed injured when he played. He was made to look like a complete idiot because there was no protection in front of him. yeah. And it's just like watching Varane play as a Madrid fan. Ke Varane, when Madrid signed him, I remember thinking, Madrid have signed the next big defender. Yeah. Then what he did for France, he was the best defender in the 2018 World Cup again. And he was a leader. He was everything that United needed. And then he goes to United and like it just does not make sense. I think इसको ना दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं. एक ये कि specifically, for example, Varane, for some people like you who've seen him like literally win so many 4-5 Champions League titles, you can understand what his strengths are. और United जैसी टीम में, whether it's tactically, whether it's the setup, कि वो क्यों नहीं perform कर पा रहा. And then there is the other half of it, which is ये बंदा recruit क्यों हुआ? Because हम इतना दोनों साइडों पे गालियाँ पड़ती हैं. एक के setup के टाइम पे ये player ठीक खेल रहा है, सही out of position खेल रहा है. Maybe a lot of times people don't look at the setup of the team, they look at players individually, and वो Delict हो जाए, वो Varane हो जाए, वो Martinez हो जाए, everybody's picking up on Casemiro's individual mistakes, not really getting into what the team setup is. और I think there is a lot of thrill that people also get कि United में बंदा आया और देखो हमने कहा था 3 मैचेस में फारिग हो गया, 3 मिनट में फारिग हो गया. Scapegoat. So there's that scapegoating culture associated with United. I mean, there's no doubt about it. And people are jumping. छोटी सी भी गलती होगी ना उसको इस तरह मतलब magnifying glass में डालेंगे. And it gets to the players because players are, you can clearly see कि इस time पे they're watching everything that's being put up on Twitter. They're watching on X, on Insta. It affects them. I mean, Casemiro की wife. वो आगे Show the क्या trophy है? cabinet कि मतलब ये Casemiro क्या बात कर रहे हो. Yeah. No, like पता है बात घूम घुमा के वहीं पर ही आ जाती है. There is something fundamentally wrong at the club तो है ही, but also our medical staff. Varane broke down completely. Like Madrid में injuries होती थी, but it was never this bad. No. It was. Like Madrid spent the last season they won the Champions League without 3 of their main players, Yeah, and so all of them had the same injury, which was knee ligament. So No, but I didn't think I thought he'd go till 35. मैंने कहा 28 को डिफेंडर साइन कर रहे हैं, 35-36 तक वो जाएगा. yeah. इंजरी होती भी रहेगी, but like as a leader ये वो फलाना वो 2 साल बाद out of the room and like just gone. But don't like मेरा question ये है कि यूनाइटेड का जो आप मेडिकल स्टाफ की बात कर रहे हो, both of you are talking about the medical staff, वो like doesn't every manager that comes in brings their own staff? Doesn't it happen like that? हम लोग को तो I think इससे जितने प्लेयर हैं उतने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं इसके अंदर. So मतलब या तो आइडेंटिटी नहीं कोई सेट होती है या कोई को जो होता है कि आपको प्रोसीजर जो क्या कि लाइक एक हमने करना है
या मैनेजर्स डेस्परेट होते हैं, वो प्लेयर को जल्दी खिला देते हैं, फिर कवर नहीं होता. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट नो कि ये कितना सच है, बट टेन हाग्स प्लेइंग स्टाइल हैज बीन आल्सो एट्रिब्यूटेड टू the injury pile up कि like वो इतनी over intensive वो करते हैं, these guys aren't ready for it. I mean, let's be honest, he's not Marcelo Bielsa जो No, के ट्रेनिंग but करवा रहा उससे- हो कि जी fouls जो मर्जी allowed है. He's not Marcelo Bielsa. He's not some genius who invented a new style of play. His pressing, if you want to talk about his counter press, it's not as good as other यार teams. माउंट लाइक क्या 1.5 साल हो गया, शायद 2 साल हो गए, कितने मुझे 1.5 साल हो गए, 5 मैचेस खेल चुके हैं. वो जिंदगी में कभी वो इंडस्ट्रीज प्लेयर होता था, मतलब ये क्या हो रहा है. But I think maybe as amount the year he was coming in, he was injured. There could be an argument that Chelsea have always sold really smartly to United. Madrid have sold really smartly to United. Maybe there's that argument. I'd love to understand from you when Casemiro, Varane were leaving the team. Was there that feeling कि यार ये क्यों जा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? They are at the heart of the team, or were you guys like, okay ठीक है, अच्छे टाइम पे निकल रहे हैं और जरूरत से ज्यादा I पैसा जा think रहा है? Varane hurt far more. Yeah. Because जब Varane गया था तो Real Madrid was going through a phase of transition as well, Transitional right? उसका. And Cristiano had left, Yeah. Varane, left, Ramos, club icon, Yeah. left. And it felt at the time कि अगर आपने Ramos बेचना है तो Varane ना बेचो. Like you need to have that leader, One right? figure जो उसका होता है. And then Madrid, like, no matter what you say about Madrid winning a 2021 Champions League, that was a transitional year, and Ancelotti pulled off a miracle. Yeah. ठीक है, विनी जूनियर wasn't already a great player, यानी उससे 6 महीने पहले नहीं. बेंजीमा उसको कह रहा था कि गालियां इसको खिला क्यों रहे हो, इसको ये- निकालो बाहर इसको से. निकालो, right? Wallahi he is against us. And then Varane goes to United and I'm like, yaar, United, now they will have a strong base, right? Yeah. And United basically Varane जाता है, वो शुरू में जब खेलता है and whenever he plays United get good results, Yeah, right? yeah. And suddenly like every other mistake उसके लिए Varane को point out किया जा रहा है. हाँ कि जी वो बॉल प्लेइंग डिफेंडर नहीं है. अबे मतलब I mean, Varane कैसे ball playing defender नहीं है, अल्लाह. So इस पे टैक्टिको ब्रेकडाउन हो चुका है. on Cassie as well, the same thought process के. नहीं, कैसेमीरो पे तो ये था ना कि we all knew कि Tchouaméni has come in. But क्या आपको कैमा लग भी रहा था, था कि कैमा आपको क्या लग रहा था कि जला हुआ कारतूस दे दिया फिर अभी? No. बहुत सीजन प्लेयर दे दिया, देखे जाके At the scene time check करें. at the time I think even Madrid जो press भी है और Spanish press was कि Madrid shouldn't have sold him. Tchouaméni को 1 साल इसके अंडर देना चाहिए और फिर Tchouaméni would become that player. And Camavinga भी था, and Camavinga का एक बहुत मेजर मसला था कि he used to carry the ball too much and lose the ball. ठीक है, उसकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी, तो even now that's a problem with him कि he loses the ball, wins it back as well but loses it more often. The problem with Casemiro is कि आप अगर ब्राजीलियन फुटबॉल देखते हैं या कैसेमीरो का पूरा Yeah. करियर फॉलो किया है, तो आई इवन रोट अ पीस ऑन कैसेमीरो कि Yeah. यूनाइटेड के लिए दिस इज अ ह्यूज साइनिंग Yeah. एंड द फर्स्ट सीजन वाज गुड, बट यू कैन नॉट आस्क कैसेमीरो टू बी द प्लेमेकर. Yeah. ही इज नॉट अ डीप लाइन प्लेमेकर. Yeah. He isn't. Like अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि he's going to ping a 70 yarder, that's not happening. Yeah. I mean, Casemiro always Madrid under like every manager that came, Zidane के Mainstay. under Casemiro Mainstay. था, तो Casemiro always जब goal kick होती थी, he would go to the left hand side and provide an advanced long ball option to the goalkeeper. Yeah. He would never be the Toni Kroos. Yeah. And even Modric would advance. Toni Kroos was a press resistant player. Yeah. Ramos was the one जिसको goalkeeper pass करता था. Understood. Not Casemiro. Like the number, there's actual data on this कि Casemiro was not the first person to Was it? pass the ball. Probably these two, and then you add Ronaldo into the mix as well. Probably, maybe not at the peak of their powers, but peak of experience, peak of. I think probably मैं सोचता हूँ रेहान भाई, when you've worked with the players, right? There's this confidence that some players have, right? We have a Yeah. dressing room में आते हैं, Arrogance, everybody yeah. starts looking up to them, standards get Yeah. raised. You would expect that people who have gone through that Champions League, cycle of winning so many matches, जब ये dressing room में जाएंगे तो एकदम से standards ना उठ जाएंगे. Yeah. But what you're saying about Varane के थोड़े 2-3 मैचेस के बाद you can tell के shoulders are slouched, शक्ल बनी हुई है, Yeah. समझ नहीं आ रही. कैसे When I look at Cassie right now, it looks like खेल रहा है कि he has a point to prove to the world. नजर आ रहा है कि शक्ल पे tension he's trying to make late runs into the box. गोल करने की कोशिश कर रहा है, गोल करने की तो कोशिश कर रहा है. I'm trying to understand कि एक player who knows कि मेरी capacity limits क्या है, who knows कि मेरा limitation to play क्या है, what can I bring to the table, does it have to prove anything to the world? Probably United ने जितनी total Champions League जीती है उससे ज्यादा उसने अकेले ने जीती हुई है, right? Yeah. तो why does he get into that situation? Is it something? I don't think for this you can just attribute to British media, because British media is
I mean, applying to everyone, all the teams, especially to United, क्योंकि special focus वहाँ I पे है, think- it's what sells. I think मैं एक चीज़ तो ये I used to cover Spanish league BBC के साथ भी जब मैंने काम किया तो I used to cover Spanish league तो उनकी जो मीडिया है ना इंग्लिश मीडिया से कुछ 1.5 करोड़ मतलब वो तो बुरी कोई है। कंपैरिजन ही नहीं है, Yeah. वो तो हेड हंट घर पहुंच जाते हैं Yes, बंदे के। and like there's a culture in Spain which is called the ultras culture. Yeah. Where the ultras can knock at your door. Hmm. Fans can knock at your Yeah, door yeah. and come inside, right? So and it's nothing compared to what like And England. they're में- violent, death threats है ये Yeah. आप एक क्लासिको हार जाओ आपके खानदान की Yes. लाइक वो लाइन दावे पे अभी आ वो गए। एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का जो डार्बी थी उसमें मैच हैड टू बी Yeah. पुट सो दैट्स नॉट मीडिया इट्स व्हेन योर fellow players start talking about you like that which is Exactly. like Jamie Carragher saying leave football before football leaves you then every other pundit who's working for TV channels who's a retired player when players talk about players Yeah. is when the problem arises it's never the media it's always when your fellow colleague says something Spanish media में पुराने players नहीं बात कर रहे Spanish media में पुराने players are not like this. They are like different. There is a level of respect. There's a level of respect there. अब मतलब डच में देखो जो जैसे फॉर एग्जांपल स्नाइडर या कोई जाके जो बोलता है ना Yeah. जो बहुत वैंडरवार्ट और Yeah. ये स्नाइडर जाके बोलते हैं बहुत आउटलैंडर स्टेटमेंट्स देते Yeah. हैं Yeah. कि मैं इससे बेहतर था इससे था Yes. एवरीबॉडी मेक्स फन ऑफ देम Yeah. फॉर लाइक बीइंग सच Yeah. इडियट्स के यार ये मतलब क्या बातें करें इनकी कौन बात सीरियसली लेगा इन कंपैरिजन अगर जेमी कैरेगर को कौन सीरियसली लेता है यार लाइक मतलब But there that's the is- thing ना there England is में creed I understand कि like he offers some insight या कुछ थोड़ा बहुत इस तरह से which maybe people think कि there is a level to this but I still feel कि in terms of judging somebody who's won so much and who's been integral to everything how can you write him off based on a struggling team I think yeah number 1 and number 2 एक बहुत मेजर मसला इंग्लिश कल्चर के साथ है कि राफा बेनिटेस की भी स्टेटमेंट है कि जब मैं इंग्लैंड आया तो मैंने कहा कि यार इनको तो टैक्टिक्स किसी ने कभी सिखाई नहीं है Yeah. इवन नाउ व्हेन यू लिसन टू कमेंट्री लाइक Yeah. गैरी नेवल से को वैलेंसिया वाले टाइम का पूछे जब वो मैनेजर था Yeah, ठीक he's है? like कि मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या Yeah. मेरे साथ. And so like tactically England अब इंग्लैंड की फुटबॉल क्वालिटी हैज इंक्रीज्ड एज वेल बिकॉज यू हैव सो मेनी फॉरेन मैनेजर्स evolution हो रही है Like my favorite stat ever is Yeah. that the Premier League has never been, since it converted into Premier League, has never been won by an English. कि यूनाइटेड की जो लीडरशिप है ना जो डिसीजन मेकर्स हैं आई एम टॉकिंग अबाउट वुडवर्ड जो पहले था बर्ट और अभी बीच में बैठे हुए थे आई ऑनेस्टली थिंक कि डिसीजन मेकिंग इस तरह करते हैं यार कि 2-3 न्यूज आइटम्स लीक करके देखो सी व्हाट द मीडिया इज Reaction कहाँ से आ रही है? इसके ऊपर क्या रिस्पांस आ रहा है मैनेजर पे क्या आ रहा है आई थिंक दे डिड फॉर टेन हाग दे डिड फॉर ऑली मूरिनियो पे गया था रिस्पांस अच्छा है चलो ठीक है साइन कर लो एंड यू आर राइट कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कि यार इज देयर अ फुटबॉल फिलॉसफी बीइंग फॉरवर्ड आई मीन कोई नई बात नहीं करेंगे कि वो जो अभी आर्ने स्लॉट एंड क्लॉप सीमलेस ट्रांजिशन आई थिंक यूनाइटेड ने वो चीज तो अब फिक्स कर दिया And please bear in mind, Arne Slot was second choice. He wasn't the Yeah, I first. know. He wasn't the first. Who was the first? यार वो पोर्टो Yeah, he wasn't the first. I think he was second or third choice. I that's forget for his sure. name. Arne Slot was not. But the Liverpool first were very choice. transparent about it. Yeah. Like the entire process की first choice ये है, second choice ये है, तो they spoke to everyone. Yeah. And then they got their man, and they were very clear on the style of football they wanted to play. Yeah, so that part I think United has fixed. I don't think we can fix कि अच्छा मीडिया में प्लेयर्स बोलते हैं पुराने प्लेयर्स बोलते हैं नहीं obviously not man. there's another side to it as well जो कि यूनाइटेड का स्पेशल कल्चर है the dressing room itself it has not been united in the वो last तो 3-4 हर years. का हर यार प्लेयर का देखो मैं अपना जर्नलिस्ट मैं होता एक है. बात बताता हूँ आपको ये इंग्लैंड में अगेन ये बहुत कम है कंपेयर टू इटली स्पेन Yeah. फ्लोरेंटिनो पेरेज इलेक्शन इस तरह जीता था कि उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो फर्स्ट टाइम 2000 में जीता था कि उसने Yeah. कहा कि मैं Figo फीगो down. साइन करूंगा एंड ही वाज नॉट इवन इन द टॉप 3-4 कंटेंडर्स This was on a bet. राइट Yeah. एंड देन ही वेंट टू फीगो एंड फीगो के एजेंट को उसने एक नैपकिन दिया न्यूज़ Yeah. लीक कर दी Hmm. फीगो ने साइन इसलिए किया क्योंकि फीगो ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है Hmm. he won the elections Yeah. and Figo couldn't go back on it Yeah. and the entire drama happened everyone has seen those documentaries and Yeah. all but living through it at the time Yeah. just the promise of Figo Yeah. was big enough Yeah. just the promise of Laporta won Barcelona's election Beckham. Yeah. Beckham की वजह से and Beckham went to Real Madrid he Yeah. ended up signing Ronaldinho Yeah. and Ronaldinho like completely changed The history of like Yeah. the trajectory of Barcelona from that. sometimes you get lucky but ये leaks हर जगह होती हैं यार
नहीं बट ये- मैं दूसरी लीग की बात कर रहा हूँ so- इंटरनल Yeah, यार Zidane के खिलाफ Yeah. there was an entire campaign from within Madrid. Yeah. Like Madrid का अपना dressing Yeah, room yeah, use yeah, leak yeah, कर yeah. रहा है. Not Madrid का dressing room, players loved him. It was Florentino himself and other people. And Zidane Beckham का is- भी तो इशू था कपेलो के Yeah, अंदर yeah. Beckham का जो टाइम चल रहा था Yeah, कि वो यानी Capello- Capello used to leak information. Then Beckham's team used to leak information. It happens everywhere. मतलब वो it's a part You of- cannot in any dressing room. मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम में I worked in professional dressing rooms. Professional sports team में you will never find 18 से 19 या 25 player on the same page. There are always different personalities. That is where man management skills are very important. And I feel United have never had that man manager since Ferguson left. And people forget that Ferguson always used to have a coach under him. He was the manager. He always had a coach. And I remember like Patrice Evra ने भी recently बात की कि कार्लोस क्यूरोश अगर नहीं जाता Yeah. तो तो हम लोग we शायद- would have won the yeah. Champions League. Yeah. Well, and पता है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि like the respect that Carlos gets from like ये पूरा United का जो वो class है ना and he still couldn't land a job or see it through type of No, stuff. he went to Real Madrid. But like वो नहीं हुआ ना वो तो 1.5 साल बाद वापस आ गया था I वहाँ से। mean वो तो Madrid का and भी है। उसके बाद Yeah. like he won the Champions League with United again. Yeah. बट उसके बाद वो एंड में कतर चला गया था वो उसको कोच करने के लिए Yeah. पता नहीं घूम घुमा स्कैंडल के भी अटैच है ना आजकल के पता नहीं पैसे कहाँ he became a journeyman out of it but Because again, Carlos Queiroz is someone like you have leaders, which Ferguson was, Yeah. and I remember like Ferguson went years without winning the Champions League. Yeah. Like, Yeah. Premier League जीता the frontier that was left for Champions League, and he became obsessed with it. ट्रेबल के बाद देखो अगर तो ट्रेबल से लेके 2008 तक No, was a Yeah. And even before, like the treble when he won it, he was obsessed with it. yeah. And basically उसने मार्सेलो लिपी को देखा, उसने different managers who were successful in Europe उनको देखा, उनके staff को hire करना शुरू किया, and he was intelligent like that. Yeah. कि players manage मैं कर लूँगा. Tactically I need people to come in. ये जो अब वो शौक चढ़ गया ना कि जी मैनेजर भी हो, कोच भी हो, डैडी भी हो, मम्मी भी नहीं हो. बट एंचेलोटी देख लो ना एंचेलोटी मैन मैनेजर एट इट्स लाइक फाइनेस्ट उसका बेटा जो है वो सारी Tactically, yeah. नहीं बट ब्रिटिश मीडिया एक नैरेटिव स्प्रेड कर रही है कि द मैनेजर्स टाइटल इज गॉन अब आपको हम मैक्सिमम रखेंगे हेड को- हाँ, कोच like पीछे वो- एक बंदा बैठा है दफ्तर में उसका नाम है डायरेक्टर फुटबॉल वो टीम सेलेक्ट करेगा Which is वो बंदे डालेगा और आपको जो बंदे दे दिए और जो टैक्टिक्स बता दिए वो चलाएं That's it. which is true for every league in Which the world has for been some for coach. like Who is the man manager decades. then? So the head coach is supposed to do So the आप tactics and no then तो आपको स्पोर्टिंग डायरेक्टर कह रहा है स्पोर्टिंग डायरेक्टर आपको इसलिए अच्छे चाहिए लाइक and this is like ex-players like Edu come in. जब मैनचेस्टर सिटी signed a sporting director from Yeah. Spain Yeah. ठीक है we all know मॉन्ची की सारे बात करते हैं सेविया का उसने सारा चेंज कर दिया in the way they played and everything कौनचे तो लेजेंड है and you have like इवन लिवरपूल क्या था वो पॉल yeah Michael Edwards. माइकल एडवर्ड्स but like you still have people like Klopp and Pep who want to take complete control like Pep से Yeah. कौन argue करेगा sporting director Okay, आके? भाई but Pep still had that help from a sporting director हैव यू सीन Tiki. वो जो Amazon की जो उसकी वो Yeah. थी वो सिर्फ टिकी वो द बेस्ट पार्ट वाज पेप ये नहीं कहता था कि मुझे ये चाहिए yeah टिकी वुड गिव हिम अ लिस्ट Yeah. एंड पेप वुड चूज कि यार अच्छा लाइक वो this is लपोर्ट the type I want ये right? लपोर्ट के टाइम जब उन्होंने लपोर्ट साइन किया था ना Yeah. सेंटर बैक तो तब उन्होंने वो वाला पीरियड कवर But किया that है happens when the manager has a lot of confidence कि यार जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं तो वो टिकी आया ही वो पेप की Yeah, रेकमेंड yeah, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ एरिक टेन हाग cannot complain about not Backing. getting power Backing. आपने यूनाइटेड की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बाहर निकाला ठीक है इससे ज्यादा बैकिंग आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा बैकिंग आपको क्या चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स एंड फॉर मी स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड जेडन सैंचो को आपने साइडलाइन किया और किसी ने आपको कुछ नहीं कहा द क्लब बैक यू राइट नहीं I don't think इतना आसान था उसने back कर दिया। I will या देखो एरिक he disappeared वो खुद छोड़ के चला गया मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से कि like he just went on a Same for Ronaldo. He wasn't showing up to. नहीं सैंचो को No, but क्रिस्टियानो के साथ तो प्रॉपर टेन हाग की लड़ाई सबको पता है यार he वो तो wanted him out and everything देख- but यार Ronaldo- कि वो स्टार्ट कैसे हुई टेन हाग साइन हो गया जबरदस्त हम क्लब का डिसीजन उन्होंने कर लिया अब किसी प्लेयर्स से तो नहीं पूछना किसको साइन करना है प्री सीजन स्टार्ट हो गया प्री सीजन पे पीपल आर सपोज्ड टू कम टू I'm not saying- and the media is saying I'm not saying where is Ronaldo is Ronaldo? right. Let's get this straight. I'm Yeah. not saying Ronaldo is right. Yeah. I'm saying Ronaldo should never have been signed by United. never True. I Okay. hunt like It was a nostalgic signing and great. for him. absolutely love the guy I think following football because of him following मतलब United that religiously because of him
ट्रांसफॉर्म फुटबॉल, लेकिन हाँ गलत डिसीजन था, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि क्लब ने उसको बैक किया। क्लब बड़ा तेज है, क्लब ये कर रहा है कि अच्छा यार देखते हैं फैंस क्या कर रहे हैं, मैनेजर को कहते हैं हम पीछे खड़े हुए हैं, यार थोड़ी सी ये नॉइज आएगी मैनेजर को फारिग कर देंगे। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, यू नो इफ यू वांट टू compete with that level of club ना, तो आपको इतनी बैकिंग वहां पे एज मैनेजर नहीं मिलती। बायर्न म्यूनिख लीग जीता है, वो अपना मैनेजर सैक कर देता है। बट क्योंकि चैंपियंस लीग नहीं जीते हम। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ वेल बैक्ड आर द पीपल मैनेजिंग द क्लब? So, यूनाइटेड में तो टोटल बात ही हो रही है ना अब 2006-7 रैडक्लिफ ने जब से खरीदा है, जब से ग्लेजर्स आए हैं, नोबडी इज बैकिंग द क्लब। जब तक डेविड गिल था तब थोड़ा था कि यार अपनी लॉबी है, पीपल अंडरस्टैंड द क्लब, एलेक्स फर्गसन साथ खड़ा बट वो है। भी ड्रामा ही था। डेविड गिल भी तो तब उस एट द एंड ऑफ द वो टेन्योर वो ग्लेजर्स का ही वो था ना, वो उसका स्पोक्स पर्सन था, बिकॉज वो ग्लेजर्स तो खरीद चुके हुए थे तब तक। फर्गसन ने पता नहीं 5 साल डिफेंड किया ग्लेजर्स को कि जी वो मुझे पैसे देते मैं खरीदता नहीं हूँ। yeah, and I think United के major problem, United have not been able to identify their head coach, manager, whatever you want to call him. आई थिंक प्रोबेबली स्टेप वन उससे भी And by the way, पहले, उससे भी पहले Radcliffe ने club खरीदा और everyone's like, you know, it's going to change and all and everything. उसमें women's football की भी एक interesting story है which we'll save for another episode. Yeah. But I think उसमें सबसे important चीज लोगों को ये realize करनी है कि still the money is held by the Glazers. So if he Yeah. wants to sign someone, yeah. he needs तो to वो support. क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो वही आई है अभी थिंक तक। मोहब्बत तो वो दिखा रहे हैं वहां पे, अभी तक तो कोई ऐसी यार मोहब्बत क्या दिखानी है मतलब the प्रॉब्लम इज नॉट देयर कि प्लेयर साइन करने, द प्रॉब्लम इज कि दैट स्ट्रक्चर व्हिच सेज कि यार ये प्लेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजर, इट इज पार्ट ऑफ दैट फुटबॉलिंग सिस्टम। ये तो चीज थी नहीं पहले, ये अब आ गई है। ओके ठीक है, एक चेक। ड्रेसिंग रूम, आई थिंक टेन हाग, गिव हिम क्रेडिट, उसने एटलीस्ट कोशिश ये की है, I disagree. कोशिश ये की है कि I people disagree. that are on the same page with him, they continue being part of the club. So basically what बाकी सबको आहिस्ता आहिस्ता basically उसने what he बुलाया does करा। every day is Yeah. कि वो हर इंटरव्यू में आके literally ऐसा लगता है कि वो जॉब इंटरव्यू दे रहा है कि I won these many trophies। ये वो last year after the last league game at Oh Old my Trafford, God, I he gave a can't speech, go- right? It's like, I'm sorry, but it's like watching a car crash in yeah, like I'm sorry, slow but motion. like Yeah. Erik ten Hag, like आप कहते हो कि Ferguson did not won anything for the first 6 years, won an FA Cup in between, then won the Premier League. आप ये सारी बातें करते हो। Ferguson was backed by the club, yes. फर्गसन को अब लोग कहते हैं यूनाइटेड की वो जो टीम थी द ग्रेट टीम इसलिए बनी कि फर्गसन हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड एंड यूनाइटेड वाज स्पेंडिंग मोर मनी देन एनी अदर क्लब इन इंग्लैंड एट द टाइम, राइट? बट फर्गसन का स्टाइल ऑफ प्ले आपको नजर आता था, आपको उसका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट नजर आता था कि फर्गसन इज फ्रेंड्स विद रिसेप्शनिस्ट, Ferguson is friends with every staff person there. This city, he was friends with every bar manager on the city के कोई अगर क्लब में वो आया है on a weekday तो उसको रिपोर्ट जाती थी और अगले दिन उसकी लाइक एस होती थी। यानी वो बेकम की अम्मी अबू, स्कोल्स की अम्मी अबू, गिग्स की अम्मी अबू, इनके साथ उसकी प्रॉपर रिलेशनशिप्स रहे। You knew what he was trying to do, right? But please, like United, टेन हाग वाली ये जो चीज है ना, on the interviews coming and saying कि मैंने तो 2 ट्रॉफी जीती हुई हैं, आप और लोग क्या चाहते हैं मेरे से। This is probably recent. You go back to his first interview, not inspiring at all. जब उसने कहा eras come to an end, you actually see the whole interview, you're like मतलब ये क्या बोल रहा है? And I don't like hearing this guy speak. I don't think they hired him for his charisma, right? no, but then stop trying to show that charisma. No, but Like, this is have you ever seen Pochettino? Like, okay, Pochettino, Chelsea का बुरा सीन। Have you ever tried seeing Pochettino come out and try to be an inspirational figure? no वो शट अप कॉल देता है। ठीक है, मैं आपको सबसे like the greatest genius in football management and coaching, जिसकी सारे by the way कॉपी करते हैं, यानी Pep Guardiola, by the way, before he joined Barcelona, had a 4-hour meeting with this guy. Bielsa? Is Bielsa, right? Yeah. Bielsa is daddy of tactics and everything. Yeah, and everybody pressing worships and him. Counter pressing and like Yeah. उसका style of football है। But Bielsa का problem ये था कि Bielsa को अगर आप robots दे दो तो वो सारी जिंदगी मैच नहीं हारेगा, but because he had to deal with human beings, he couldn't. He could. Yeah. Benitez couldn't like not Yeah. a good great man manager, and that was his biggest flaw. उसका भी अच्छा, Bielsa ये का मैंने आपको बताया Bielsa का, and आपने बताया Benitez का। What is Ten Hag? कुछ भी नहीं, and I'll tell you why. एक सेकंड एक सेकंड you and I last season were the only ones advocating कि यार this season was hampered with injuries, तो हमें like अब देख लेते हैं कुछ निकल आया है, Which is fair. मतलब as How is it fair? A club that lost its main centre back and the best goalkeeper in the world, Yeah. right? And another player in their team
another center back, like both their main center backs and the goalkeeper were out, went on to win the Champions League despite not having the squad depth or the अच्छा चले वो Yeah, but- चलो, लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन Real कर ले Madrid छोड़ आप दें। लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन Real कर ले Madrid आप छोड़ मुझे दें। बताएं उस मैड्रिड टीम में वन प्लेयर फ्रॉम यूनाइटेड हु यू ट्रेड ऑन एनी स्लॉट एनी पोजीशन वन प्लेयर फ्रॉम यूनाइटेड। आपको पता है यूनाइटेड रियल मैड्रिड का सेंटर बैक कौन था? जॉनी एवंस तो नहीं था नाचो था। जॉनी एवंस तो नहीं नहीं, था but from United Oh, के but अगर like लिंटलॉफ तो नहीं था ना यार मेरी बात देखो The standard is quite low. नहीं बट लाइक एक सेकंड कंपेयर नाचो अगर हो भी द कॉन्फिडेंस वो कितनी चैंपियंस लीग जीत चुका है अब तक नाचो बेसिकली 6 जीता है, हाँ जिसमें से एक में उसने स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ बट अगेन लाइक ओके, you इस तरह realize the तो confidence that he has इस as a तरह तो यार रोनाल्डो, आई थिंक ब्राजीलियन रोनाल्डो 94 का वर्ल्ड कप ही जीता हुआ है यार, वो स्क्वाड में था। लाइक एक सेकंड ऑनरी वगैरह क्रेडिट लेते हैं ना वो उसकी वो जो जब वो पेरेज और वो बेंच पे होते थे जिसके तो ऑनरी ने तो गोल भी किया था 98 में, बट माय पॉइंट इज कि नाचो वाज नॉट स्टार्टिंग फॉर मैड्रिड, राइट? एंड आई एम नॉट सेइंग गो विन द चैंपियंस लीग, डोंट compete with Real Madrid, compete with Brighton. I am not asking you to, like you are asking me to talk about, you know, यार ब्राइटन के साथ तो वैसे जब मैच होता है तो मेरी पार्टी होती है। चलो by the way stop giving like a lot of hate to Brighton. I think वो मनी बॉल मैनेजमेंट जो है ना नो आई डोंट लाइक इट्स माय, मुझे अगर आप पूछें प्रीमियर लीग में किस टीम को मैं सपोर्ट करता हूं तो ब्राइटन वुड बी वन ऑफ द टॉप 2-3 टीम्स दैट आई डू सपोर्ट इन द प्रीमियर लीग। न्यूकासल फॉर कंप्लीटली इमोशनल रीजंस कि जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू की थी तो न्यूकासल का जो स्टेडियम था इट वाज अमेजिंग, द फैंस वर अमेजिंग। Wow, I have another, you are the fourth person I know. कौन खेल रहा है My one- Alan Shearer had recently come and मैं काफी बुढ़ा You know, there's football- this is a sidebar, but there's a Pakistani Newcastle supporters club और WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, मेरा एक दोस्त उसमें है, उसमें कितने लोग होंगे? 4 छठा मेरे के कह रहे हैं। 4 लोग official हैं group और मेला उसके अंदर है। ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल ग्रुप नहीं, 5 लोगों का क्या official? मेरा एक करीबी दोस्त हारिस अजीज मदारी भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो न्यूकासल का फैन और न्यूकासल की शर्ट्स वो लेके Shout out to Haris Aziz. Yeah. अब my I'll give you like जो अब मुझे the realization that's finally seeped in now, and the reason why I've just like completely blocked all my group chats out now is because the comparison comes जब टेन हाग आया तो उसी टाइम पे एमरी एस्टन विला है, पोस्टेकोग्लू टॉटनहम आया है, एंड आर्टेटा का लाइक वो स्ट्रगलिंग फेज आई थिंक वो 2 साल उसके बहुत बुरे गुजर चुके हुए थे तब तक टाइप इस तरह। एंड द फैक्ट लाइक have you seen the levels? Like Aston Villa is now playing Bayern Munich. Yeah. Unbeaten. Tottenham is now just like the most fun team to watch in the league at this point in time. Without doubt, yeah. And Arsenal is up like they're the ones who can drive City to the end. Like Yeah. they'll give them आखिरी दिन तक उनके साथ चिपक के रहेंगे. And one of these years they're going to convert into like a title. So where is मतलब कोई और इसमें एक चीज which really turned it for me when you look at Chelsea, मैं इतना खुश हुआ था पिछली इंटरनेशनल विंडो में when the news broke के टॉड की लड़ाई चल रही है, दोनों ओनर्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इनका शुक्र है एक तो इनको फोकस मिला, अब इनकी मैनेजमेंट के बारे में बातें होगी, प्लस नया मैनेजर है लगने लगी है, एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन अबाउट कि एक स्क्वाड खेलेगी एक स्क्वाड लेना उन्होंने यार ब्लास्ट कर दिया आगे लीग में, and they're playing great. निकलस जैक्सन वापस चल पड़ा यार। Because basically what they said at the end of the season was कि we are looking at a young profile of a manager. Yeah. And they identified it and said कि भाई हमें young चाहिए। अब everyone started following Nagelsmann जब manager बना and he was successful in Germany and also you see a lot of big football clubs now opting for really young managers. Yeah. Like Bayern Leverkusen, company. Yeah. Company. Bayern Munich went for company. They had so many other options. It is Bayern Munich. Like. And this is confidence coming from के players हमने young नहीं, time but के वो बना दिया नहीं पिछली management strong है this style I think that what they're looking for the identity, the thing is कि like मैं Bayern, I think I give Bayern the most credit out of all the clubs for their transformation because Pep जब लेकर आए थे they're like we want to play this way. अभी treble जीत के आए हैं, like they just won the treble and they're like कि it's fine, हम लोग ने इस तरह जीत लिया but this is the way of the future and we want this. उन्होंने treble जीतने के बाद identity shift किया because they're like we need to catch up to the time that we're in right now. वरना वो बिल्कुल different style of football खेल रहे थे. Pep came in and brought in something, वो उसने लाम को CDM कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया and nobody said anything. Even like Champions League नहीं जीत रहे. By the way, who won the World Cup in 2014? Germany. And where was most of Germany's team from? Bayern. Right? And so that style of play which जो हमारे जर्मनी के ग्रेट मैनेजर थे जो नाक में उंगलियां डालने का बहुत शौक था जिनको उन्होंने basically he copied
the style of play that Bayern were doing. And in the mid tournament, he realized, कि, oh God, maybe I should go back to Lahm being right back Yeah. and go to old school. Yeah, And they won yeah. the World Cup. But the point here is कि Bayern Munich जैसी टीमें जो होती हैं, like they वो अपना identify player. वो सारा कुछ चेंज कर रेवोल्यूशनाइज करने के लिए तैयार है, इवन आफ्टर हैविंग वन एवरीथिंग एंड डोमिनेटिंग फॉर अ अच्छा, डेकेड. बाय द वे मुझे आजकल यूनाइटेड फैन से बात करके लगता है कि जो मुझे ना 90s और अर्ली 2000s में कसम से मेरे सारे लिवरपूल फैंस ना ही ऐसी बातें करते थे. ऑल्दो लिवरपूल बेचारे उतने पैसे नहीं खर्चते थे जितने यूनाइटेड इस वक्त खर्चता है. एक तो ये चीज़, और दूसरा आपने जो बात की ऑन गोइंग फॉर यंग मैनेजर्स, ये जो है ना आइडिया ऑफ कि जो फर्गुसन का स्टाइल था, इफ यू कैन ब्रिंग दैट बैक टू बी सक्सेसफुल, नो इट वोंट बी. सही कह रहे हैं. बिकॉज वो 2009 में आपको 8 में नजर आ गया था, 11 में नजर आ यार गया मैं था. एक बात बताता हूँ, 1997 में किसी प्लेयर ने एक बुरा परफॉर्म किया है ना, तो 3 अखबार 4 अखबार में आ जाएगा, बीबीसी के ऊपर आ जाएगा, एक दो और न्यूज चैनल्स के ऊपर आ जाएगा. अब आप इंस्टा, ट्विटर, X or whatever you want to call it, And they're looking at it. yeah, and you're directly tagged. यानी ये नहीं कि को आपको like that it's changed. Mental health issues have changed. The world has evolved. The game has become more commercial. Ferguson जैसे managers 90s में बहुत आराम से कह सकते थे तू नहीं करेगा ऐड, और तुझे मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट कर रहा हूँ, nobody would say anything about it. Yeah. And so now that can't happen because players like Haaland and Mbappe, तो वो तो अब वो आपको बेसिकली हालैंड का पूरा करियर मैप्ड आउट है कि इतने साल में ये करूंगा, इतने साल ये करूंगा. एम्बापे का पूरा करियर मैप्ड आउट है कि मेरे इमेज राइट्स डील ये होंगे. फ्रॉम द एज ऑफ 15-16 दे न्यू, देयर पेरेंट्स न्यू कि हमने इनसे ये करवाना है. दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फुटबॉलर, एंड दैट्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स. जूड बेलिंगम उस 13-14 साल की उम्र में सबको पता था कि जूड बेलिंगम, यानी बर्मिंघम सिटी में बड़ी कोशिश की थी यार, सोचिए अगर आगे होता तो लग. यूनाइटेड ट्राइड टू साइन हिम. सोल्शायर ने उसके घर गया था रेडबर्ड डॉर्टमंड आके. लाख शुक्र है कि he did not end up. With Man United ना, अब सवाल ये, I would say ownership issue not sorted. ठीक है, रैटक्लिफ को फेस बना दिया, डैन एशवर्ड को बिठा दिया डायरेक्टर फुटबॉल, कुछ चीज़ें फंडामेंटल लेवल पे फिक्स होना शुरू हो गई हैं. एंड देन क्लब इज डूइंग सम P&L मैनेजमेंट के जी बंदे कम करने हैं, ये करना है, वो करना है. और फिर उसके बाद जी स्टेडियम का इशू, एंड दैट्स एन इशू दैट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व. आई थिंक नाउ द क्वेश्चन दैट probably they wanted to get to at the end of the season, which they were probably clear about, ये सीजन टपाओ, P&L मैनेज करो, टीम सीधे करो, क्लब पे कॉस्ट कटिंग करो, डायरेक्टर फुटबॉल को थोड़ी सी मोमेंटम दो. And then I think they were very clear that we're going to cut the cord on the manager at the end of the season. Now with the results, I think the train has like completely smashed. How are you 2-0 up at Porto and you're cruising and you end the game barely winning, barely drawing at 3-3? Remember my message when we went 2-0 up? एक तो ये जो हार्बिंजर ऑफ डूम, ये जिसके ऊपर मौत का फरिश्ता आ जाता है मेरे सर पे, यार 2-0 up है, but it would suck if we lose from here. So I said, so हमारा ना like on our, unfortunately we had like this big WhatsApp group with all of our friends. We used to talk about football, which is very toxic. Then 4-5 years ago we decided कि United की बात इस ग्रुप में नहीं कर सकते. So 80% of the group basically made it as a group called United Boys. वहाँ पे हम फुटबॉल की बात करते हैं. So कुछ rules हैं. After every goal foreign message आने, अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एज लिखा आता है. We don't want to jinx this. We went 2-0 up. अब हम पता नहीं क्या belief दिया है मैसेज के only United can mess this up from here. नहीं यार, ये देखो एज अ मैड्रिड फैन ना, पीपल लाइक जो नए मैड्रिड फैंस हैं उनको मैं बताना चाहूँ कि it was not easy. Like the 2000s weren't easy. 2002 में Madrid won the Champions League, and honestly Madrid does not care about any other competition, right? 2003, 4, 5, 6, 7 did not even reach the quarterfinals. It was a very bad time. Manager आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, and it felt like never going to win the Champions. And then one moment, and this is despite having like the best players in the world. And also even after that, like you brought Kaká, Cristiano, Higuain and all in 2009-10 Benzema वगैरह. 2014 में अगर रामोस वो हेडर नहीं मारता तो ये चीजें नहीं होती. तो like that is in Madrid's history, that's like cornerstone. That goal and Puskás का जो 1950 में उसने गोल किया था are probably the two most important moments. Those moments, I think United doesn't have that. और उस मोमेंट के बाद मैं आपको आज तक बताता हूँ, मैड्रिड का मैच देख रहे हो ना, अगर मैड्रिड अच्छा खेल रही है ना, 60 मिनट्स हो गए हैं, स्कोर लेवल है, तो मुझे पता ही हार जाएंगे. अगर वो बुरा खेल रहे हैं और दूसरी टीम लीड कर रही है ना, तो मुझे आंखें बंद करके पता है हम जीतेंगे. And that used to be United में हमें 2007-8 तक आप मैच हार रहे हो जीत रहे हो, आपको पता है कि यार
आने लगे 88th 98th minute, we're about to throw in the kitchen sink and you will grind out the result. You will go 1-0 up. क्रॉस पे क्रॉस I think उसमें एक और reason है because you have like when you are a bigger club ना, Yeah. the bigger clubs do this more often. एंटाइटलमेंट होती है कि हम कर सकते हैं. And also you have better players. Yeah, for जो sure. at 90th minute mark Yeah. can do better things than Yeah, someone yeah. who's tired out. Yeah. And I like यार United का तो I look at them and I remember I used to watch United ना जब when I was growing up. So it was like every person I knew used to watch the Premier League. And like Every person, अब हमारे जैसे फारिग लोग देखते थे Premier League में. 9 out of 10 people used to be United fans. Yeah. And I was like यार ये क्या oh we'll do this we'll do that you know Yeah. glory Man United and Yeah. all of that ना. अच्छा यार. तो मुझे था कि ये कब हारना ऐसे ही है. कब हारना शुरू करेंगे यार Yeah. ठीक है यानी एंड देन लाइक फर्गुसन हैड ग्रेट टीम्स बट जो फर्गुसन अपने आखिरी सीजन में प्रीमियर लीग जिस टीम से जीता यार वो क्या वैसे it was shocking Yeah. like on paper I see that team again Horrible. it was shocking that he won Cleverly. And you know what the funniest thing is, this is what you leave for the upcoming manager कि यार तुमने इसको चलाना है. Make नहीं, this work. चलो यार वो 2000 कितने 13-14 की बात करो अल्लाह का वास्ता 10 साल हो गए हैं अबे like rebuild तो वहीं से शुरू हुआ ना फिर. यार every club has like basically Pitfalls इतने. अब मैं बता exact back to Casemiro. हम लेकर आए हैं Casemiro and he is the completely different profile from what you're actually. You spent 3 months running after FDJ. Yeah. जी Frankie de Jong आ रहा है बस वो मान नहीं रहा उसके अम्मी अबू नहीं मान रहे ये हो रहा है वो हो रहा है. New Schneider. एंड 3 दिन बाद जब लाइक विंडो क्लोज होने से 3 दिन पहले आया आउट ऑफ नोवेयर वी साइन कैसेमीरो एंड आई वाज लाइक भाई हुआ क्या है क्या मतलब है आपको प्रोग्रेसिव डीप लाइंग बॉल प्रोग्रेसर चाहिए था जिसने आके आपको लेके आगे आना है एंड ही इज गोइंग टू स्प्रेड इट अराउंड थोड़ा कभी क्रिएट करेगा या जो भी होता है एंड यू स्विच्ड ओवर टू कैसेमीरो ऑफ मसला है ना वो डच प्लेयर साइन कर लेता है उसको. नो बट इट्स सो लाइक हाउ इज दिस जी ये व्हाट प्रोफाइल स्पॉटिंग की किस तरह ये क्या नहीं है ना है it's just that यार you know कैसेमीरो और Ronaldo is available. Let's go. अगर आप Yes, he's available. अगर आप Let's go for it. FPJ और कैसेमीरो लेकर आते मैं कहता दिस इज ग्रेट लाइक नाउ Yeah, now if it both makes, of them had come now it makes sense but to have like credit to Frankie here because he was very adamant I do not want to leave Barcelona एक I will take सेकंड up उधर उसको उधर तनख्वाह नहीं मिल रही थी by the way उसको एक सेकंड वो उसका अब वहां पे क्या हाल चल रहा है ही इज बीन आउटेड फ्रॉम मेरे ख्याल में इस पे नहीं जाते कि अगर व्हाट इफ यूनाइटेड में आता तो क्या होता. उधर उसका जो भी हाल चल रहा है वो फिर उसके बाद ला लीगा जीता Yeah, fair. इधर वो कुछ भी ना Probably लूक शॉ के साथ बैठा होता है और साथ में मलेशिया के साथ कवर कर रहा होता है. उसकी बेचारे की इंजरी हुई है ये नहीं कि उसकी वो खेलना इट्स Just getting linked to United got him injured. I'm just so it's a black hole man I'm just so infuriated with like कि यार आपने पूरा क्या है प्रोग्रेसिव मिडफील्डर के लाइक जो 6 डीप आके पकड़ेगा रन करेगा बंदा काट लेगा आगे चला जाएगा एक विंग पे पास निकाल लेगा कुछ ऐसा वैसा फर्स्ट टाइम थ्रू कर देगा समथिंग एंड देन यू पिक कैसेमीरो like ये but yeah let's and you still don't have that progressive midfielder yet. Let's be honest, you needed to have a Casemiro and you needed to have a FD. You needed both. Yeah. Not one. And like then. But we had Fred and McSauce. Oh, McSauce तो मेरा सिर पाड़ दो. McFred. नहीं यानी अच्छा by the way मैं one of my favorite things is कि Harry Maguire is one of my favorite stories. Like Yeah. I want to touch on this. So लिवरपूल ने वैन डाइक साइन किया एक छोटे क्लब से लेट्स बी ऑनेस्ट ठीक है एंड पेड अ लॉट ऑफ मनी ठीक है यूनाइटेड ने साइन किया हैरी मैग्वायर नाउ पीपल ओवर द इयर्स हैव क्लेम्ड के हैरी मैग्वायर जब लेस्टर प्रीमियर लीग जीता था वो तो था ही नहीं वो उस टीम में नहीं था जस्ट हल सिटी में था रेलेगेट हो गया था द सीजन दैट ही वाज साइंड फ्रॉम लेस्टर वाज आफ्टर लाइक that season Leicester conceded one of the most goals in the history of the Premier League ठीक है और आपने उसको साइन किया एंड देन सडनली आपने उसको कैप्टन बना दिया ठीक है अच्छा और उसमें मुझे एक बहुत यही एनालिटिक्स का जिनको शौक है उनको मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज देखें समवन पॉइंटेड आउट के इसकी मिस्टेक्स पे गोल नहीं हुए क्योंकि लाइक बेसिकली इट वाज नेवर हिम हु वाज मिसिंग द बॉल उसके पैर में राइट there was a period of this right and then the data people came up with the fact कि वो उसकी positioning नहीं होती वो एक सेकंड जिधर उसको होना चाहिए नहीं होता नहीं वो पता है वो क्यों नहीं होता जब उसको पास देते हैं ना वो अपनी टांगें खोल लेता है कि लाइक मैं रन थ्रू करने दूंगा and he turns around the ball's too fast he doesn't get to it हाँ तो and the other person just intercepts the ball and runs away with it देखो कितने अच्छे स्टार्ट्स वन ऑन वन बीट नहीं होता वो right like these are like this is I have seen him get destroyed पर यार लाइक हैरी मैग्वायर क्या आपने आप मैं बड़ी फजूल बात करूंगा तो वो आके लाइक वो कैप्टन लीडर लेजेंड टाइप शिट कैप्टन लीडर लेजेंड आपको पता है मुझे लगता है कि
probably not suiting for United. मेहनती बंदा है, आके effort मारता यार है. मैं अब ये हम खत्म कर रहे हैं चुपचाप एपिसोड यहाँ पे. करके. ये रेहान, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. वलीद, जस्ट FYI मैं कभी यूनाइटेड को एज अ मजदूर क्लब पिक्चर नहीं किया था, बट ओके मेगन मेहनती है, not अबे मजदूर. हमारे मेहनती है. मजदूर एक जमाने में टेविस होता था कि हाँ मजदूर आता है, लाइक पुट्स इन शिफ्ट कि Yeah. टेविस. एंड अब हमारे मजदूर का स्टैंडर्ड क्या है? भाई उसने एक 3 दिन जो है ना आगे उसकी जाने से job पहले extend कर दी है. मेरा अगर कोई ये देख रहा है और शुरू में हमारे पास इतना बजट भी नहीं कि हम लोग फुटबॉल क्लब तो ये जो 2-3 लोग देखेंगे उनसे मेरा एक सवाल है, अगर आप यूनाइटेड फैंस हैं और आई एम श्योर वलीद अपने यूनाइटेड फैंस के ग्रुप में एपिसोड शेयर करेगा तो मैं करूंगा because I will get hate from them कि अभी No, तक टेन हाग को क्यों डिफेंड मुझे- कर रहे हो? Why are you मुझे- pointing at other things other than the manager? मुझे आप में से कोई एक बंदा यूनाइटेड फैंस आप सबसे गुजारिश है, प्लीज ये बता दें कि यूनाइटेड का प्रेसिंग ट्रिगर कौन है नंबर 1. अगर कौन नहीं है और वो ये देख रहे हैं कि जोन वाइज हमने प्रेस करना है तो वो जोन कौन सी है? यूनाइटेड का प्रेजेंट ट्रिगर जोन नहीं है और वो जोनल नहीं है. और मजे की बात यह है अगर बंदा तो कौन है? और मैं मजे की बात यह है Winged है. कि हमारा पिछले साल एट सर्टेन पॉइंट हमारा प्रेसिंग ट्रिगर होता था एंटनी, ठीक है. एंड वो कुकड़ी की तरह भागता रहता था हर जगह, वो अपना सर यूं करके इस तरह करके. एंड इट दैट डिडंट वर्क आउट. उससे पहले कैसेमीरो एंटनी बेचारे का क्या कसूर है अगर वो प्रेस करे और ब्रूनो छोड़ के उधर चला जाए? सबसे फनी बात यह है कि उसके बाद फिर हमारा प्रेस लीड करनी शुरू की कैसी ने, और कैसी आ गया स्ट्राइकर के पीछे बंदे को प्रेस करता I mean, why not? और Let's पीछे look at Casemiro. फिर वो जब लंबी गोल किक लेते थे तो खाली था पीछे मैदान, और वो 2 टचेस के ऊपर एक हेडर और एक डायरेक्ट थ्रू और गोल. ये हमें ये भी पड़े हुए हैं. सो अगर अच्छा उसके ये सब कुछ वलीद यू आर अवेयर ऑफ दिस राइट? पेट उगाटे आ गया अब सब कुछ. Waleed, you are aware of this. I've seen United. I watch them religiously because it's a lot of fun. Yeah. It is genuinely. it's not it's terrible football. How is it fun? How is it? I not think it's fun? just that वो किक नहीं मिलती कि ये बड़े भाई मैं बंदे आपको मारते थे बता अपने को. नहीं वो भी नहीं मैं आपको बताता हूँ इतनी ओपन मिडफील्ड Chaos. chaos. I love chaos, right? Yeah. I love watching United. Apparently so does Ten Hag. He Yeah. also loves chaos, causing chaos. Like, but वो हम chaos हमारे टीम में होती है, उनके में नहीं होती. People ask me why did you become a Madrid fan? There's a story attached to it, but one of the main reasons why I stayed a Madrid fan was the amount of chaos. Yeah. Like the way it was just chaotic. Hmm. But like if there is chaos, you know okay, Madrid will excel in chaos. When there's order, Madrid will be a horrible team, right? United though, like it's just you don't know. Yeah. यानी Who's gonna show up? How they're gonna मैन play? सिटी का मैच मैं साउथहैम्पटन के गेम्स नहीं देखूंगा, मुझे पता है ये उनको पेल देंगे, boring football. 2-0 हरा देंगे, 3-0 हालैंड गोल करेगा. यूनाइटेड का मैं साउथहैम्पटन से मैच छोड़ो, 20 से मैच यूरोपा लीग में हो मैं देखूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या है. हम रिसेंटली वो स्टैट शेयर कर रहे थे ना कि more people watch Barnsley versus United than the champion. And that's it. वो literally like वो जो होता है ना praying for our downfall वाला वो जो मीम था, that applies it's a very poignant कि वो कि हाँ बना ही हमारे लिए हुआ है, praying for your downfall. But look, I think I'm really emotionally attached. 80 as well. Most United fans are. It destroys our week. It destroys the day. I think it destroys our feelings. I've just learned do not communicate with other United fans once your team loses. नहीं मैं कह रहा हूँ Bro, एक do मैच देख रहे हो पूरे घर वाले आपको देख रहे हैं कि मतलब नहीं, मैंने and then it stays for you. I will just blank it out. But maybe we are emotionally invested, just like zoomed out. Maybe we're getting this wrong. Manager है जी, club में players आपस में लड़ रहे हैं. Maybe it's the back room. Because for my what do you think? 3 things get these right. थोड़ा सा इंसान बन जाओगे. Number 1 sack Ten Hag. Number 1, right? There you have it. Number 2 is identify what you want to play. Do you, like Arsenal की सारे बात करते हैं, they are a defensive team. They hired a set piece manager who works specifically on set pieces. You Yeah. know, Arsenal के सारे defenders when they have a corner Yeah. will be at the far post. You know every time. Gabriel has more Gabriel goals standing. Yeah. more goals than our striker does. I mean, United have scored 1 goal at Old Trafford this season, so please let's not get it. But identify what you want. Right? Yeah. And number 3 is के आप सबको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है. और मुझे लगता है The fans या और आप दोनों and also the players. स्पेसिफिकली आप दोनों के लिए है कि जो अब हम बजट रेस करेंगे जिससे हमने फुटबॉल लेके ये करना था तो हम अगले एपिसोड पे एक थेरेपिस्ट को बुलाएं अगर हम यूनाइटेड की बात कर रहे हैं बिकॉज जिस तरह आप दोनों इस वक्त रोए हो genuinely it is bad, man. It's like I'm trying to feel your pain but I just find it very funny. used to say wow. I used to say 10 years what most nonchalant way of saying I can't relate with you guys, yaar. Like no I can relate to but it's still funny.
I can like relate to it. Thank you guys So you're for saying tuning don't in. next And week. also- तो यही होगी दोबारा Also, फुटबॉल like, के साथ. मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आप एक यूनाइटेड फैन है और एक आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर मंडे को उठ रहे हैं, हाँ. तो आपकी किस्मत बहुत Now, बुरी है. add into this, for us, United was antithesis of what Pakistan cricket does. और फिर हमें Exactly. it used to get a kick. अब हर दोनों तरफ से चपेड़े पड़नी यार. समझ नहीं आ रही, मतलब देखे तो क्या देखे, यूनाइटेड पे फिर भी उम्मीद लगाई होती है कि यार नहीं ये कुछ कर देगा, which I think is wrong. I think Absolutely, I don't have any faith now. Thank you for tuning in. This was supposed to be an EPL roundup, but I think we started on a wrong foot and we completely just got sidetracked. I promise you our content won't always be like this, but like just like Ten Hag, we are the harbingers of chaos. So I hope you subscribe, you enjoy this, and we'll be back next week. Thank you.